Hello student. Today we will discuss our first poem, poet number 1.1, Past, Present, Future. This poem is written by Emily Dickinson, Emily Bronte. The title of the poem is Past, Present, Future. You know that past means बीता हुआ कल and the present means अभी जो चल रहा है वो and the future means आने वाला कल. So in this poem is written about past, present and future. So let's start the poem and let's discuss the meaning of this poem line by line. So first stanza is, tell me, smiling child, what the past is like to thee. An autumn evening soft and mild, with a wind that sigh mournfully. In this first stanza, the poet asks to the smiling child, what's what she asks? She asks that what the past is like to thee. Here, thee means you. Thee is the old word for using you. So, old English word. So, the poet asks to the smiling child that what the past is like to you, like to thee. So, the smiling child replies that an autumn evening soft and mild, with a wind that sighed mournfully. The child replies that the past is like an autumn evening. Autumn evening ये पतझड़ का मौसम है. Autumn evening कैसा है? Autumn evening soft and mild. The mild means moderately warm. It means not very cold and not much hot. With a wind that sigh mournfully. With a wind that sigh mournfully means here sadly. मतलब वाइंड क्या कर रहे हैं? सैडली सॉन्ग गा रहे हैं. Our next stanza is, tell me what is the present hour. A green and flowery spray where a young bird sits gathering its power to mount and fly away. So in this next stanza, the poet then asks to the child his or her opinion. I don't know child his or her. So his opinion about present. The child replies that the present is like a green branch of flower on which young bird sits gathering strength to fly away. The poet says that present किसकी तरह है? ग्रीन ब्रांच की तरह है. फ्लावर स्प्रे मीन्स हियर spray means a stem or branch of the tree, plant. Okay, where a young bird sits gathering. young bird है, young यानी कि छोटा पक्षी जो अभी पूरी तरह से उड़ने के लिए मतलब उसके जो फेदर है वो स्ट्रांग नहीं हुए हैं, उसे young bird कहते हैं. sits gathering its power, वो गैदर के साथ मतलब इकट्ठा बैठे हुए हैं उस टाइम पर. टू माउंट एंड फ्लाई अवे, उड़ने के लिए रेडी है. मतलब प्रेजेंट इसकी तरह है. चाइल्ड रिप्लाई टू द पोएट. द नेक्स्ट आंसर इज, एंड व्हाट इज द फ्यूचर. फ्यूचर क्या है? हैप्पी वन, हैप्पी वन के लिए. द पोएट आस्क हैप्पी चाइल्ड अबाउट द फ्यूचर. सो a sea beneath a cloudless sun, a mighty glorious dazzling sea stretching into infinity. The child replies that the future is like a sea. फ्यूचर किसकी तरह? एक सी की तरह, एक समुंदर की तरह है. बीनीथ, हियर द बीनीथ मीन्स अंडर. किसके अंडर? अ क्लाउडलेस सन मीन्स विदाउट सन क्लाउड. उसके अंदर जो सी है उसकी तरह फ्यूचर है. अ माइटी मीन्स a very powerful. Glorious means तेजस्वी. and dazzling means extremely bright. इसकी मतलब सी की कंपैरिजन की गई है स्ट्रेचिंग इनटू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी की तरफ खींचता जाता है. इन्फिनिटी मीन्स हैविंग नो एंड और लिमिट, जहाँ कोई अंत नहीं हो. समुंदर का अंत हमें पता नहीं होता, उस तरह जो खींचता ही जाता है. इस तरह हमारा फ्यूचर मतलब फ्यूचर है. सो इन दिस पोएम द पोएट आस्क a young child
questions and the child try to answer in his way. So okay student,